Hello students, so in this lecture we will study the concept of market equilibrium. So market equilibrium से हमारा मतलब ये है, in a given market मतलब कोई local area, in a given market it refers to a situation where the quantity demanded and the quantity supplied are equal. Now market equilibrium इसका significance क्या है? इसका significance ये है कि it shows an ideal condition. It maximizes the profit of the firm on one side and the utility for the consumers on the other side. Therefore, both the firms as well as consumers are happy. The profit of the firms is also maximum and the satisfaction of the consumers is also maximum. This is an ideal condition. That is why both the firms as well as the consumers, they want to arrive at this ideal condition. The actual transaction of buying and selling, it takes place at market equilibrium. All transactions are done at market equilibrium. Let us study this with the help of demand curve and supply curve, which we have studied in the previous classes. Now in this graph on the x-axis we have both quantity demanded and quantity supplied, क्योंकि मैं इस ग्राफ में demand curve and supply curve दोनों को शो करूँगा. And on the y-axis I have the price. So first let us draw the demand curve and then let us draw the supply curve. The point of intersection E is the equilibrium and the equilibrium price is P and the equilibrium quantity is Q. Suppose this is the origin O. So OP represents the equilibrium price and OQ it represents the equilibrium quantity. Equilibrium point वो point है जहाँ पर quantity demanded and quantity supplied both are same. QD is equal to QS. QD is the quantity demanded and QS is the quantity supplied. अब चलिए इसे डिटेल में स्टडी करते हैं. आप सपोज अज्यूम कर लीजिए कि जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, किसी कारण से P1 हो जाता है. नाउ एट दिस प्राइस, क्योंकि प्राइस डिक्रीज़ हो गया है, इसका मतलब फर्म्स का प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया. इसका मतलब जो पहले वो क्वांटिटी OQ प्रोवाइड कर रहे थे, OQ वाज द क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विच दे वर सप्लाइंग. नाउ दे विल रिड्यूस देयर सप्लाई. सो दिस इज़ द न्यू सप्लाई विच विल बी डन बाय द companies or the firms. Now what will happen to the consumer satisfaction? The consumer satisfaction, will it increase or decrease? The answer is it will decrease. Let me explain you how. क्योंकि price decrease हो गया है, now the consumers will want more quantity. They want this much quantity, but the firms are supplying this much quantity. So there is a dissatisfaction among the consumers because they want more and they are getting less quantity. So there is a shortage of this much in the market. Shortage in quantity. कंज्यूमर्स के पास पैसा भी है, वो ज़्यादा क्वांटिटी भी चाहते हैं, लेकिन फर्म्स जो हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी मार्केट में प्रोड्यूस करवा रही हैं. सो देयर इज़ अ डिससेटिस्फेक्शन अमंग द कंज्यूमर्स. एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ एप्पल का जो आईफोन है उसका प्राइस 1 लाख से डिक्रीज़ होके 20,000 हो गया. 1 लाख से 20,000 हो गया. तो अब एप्पल जो कंपनी है वो तो क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो गया, देन इट विल वांट टू डिक्रीज़ द सप्लाई ऑफ एप्पल फ़ोन्स, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल नहीं रहा है. और क्योंकि एप्पल के फ़ोन की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्राइस कम हो गया ऊपर से, तो लोग तो चाहेंगे यार ज़्यादा से ज़्यादा हमें एप्पल के फ़ोन्स मिल जाएँ, लेकिन जो कंपनी है वो अपनी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देगी. तो देयर विल बी डिससेटिस्फेक्शन कि प्राइस तो कम हो गया लेकिन मिला ही नहीं, ख़रीदने को मिला ही नहीं, मार्केट में जा रहे हैं कुछ मिल ही नहीं रहा, फ़ोन ही नहीं है मार्केट के अंदर. सो देयर विल बी डिससेटिस्फेक्शन अमंग द कंज्यूमर्स. और जब कंज्यूमर्स का सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, देन दे देमसेल्फ विल बी विलिंग टू पे मोर प्राइस फॉर दैट कमोडिटी, फॉर दैट प्रोडक्ट. एंड व्हेन प्राइस विल इंक्रीज, द सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज and the consumer satisfaction will also increase. Therefore, in this example, we have seen that both the firms as well as the consumers will want that price will increase and it will become the equilibrium price. So this was the one side of the story. Now let us take opposite example. Suppose the price now increases to this level P2.
Now as the prices have increased, what will happen in the demand curve? Now people will want lesser quantity because they are now again dissatisfied. जो आईफोन की कीमत 1 लाख से अगर मान लीजिए 3 लाख हो जाती है, now people will want less of iPhone. But what will happen to the firm's profit? Whether the firm's profit will increase or decrease with the increase in prices, the firm's profit will increase. If the revenue increases, the profit of the firm will increase. If the revenue increases, and revenue is price into quantity. लेकिन प्राइस इंक्रीज होने के कारण अब कंज्यूमर्स आर बाइंग लेस, सो देयर इज एन एक्सेस सप्लाई. So this much supply is the excess supply. Although फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस तो थोड़ा इंक्रीज हो गया, बट क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई. जो फर्म की जो सेल थी वो ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा ख़रीदा ही नहीं. प्रॉफिट P इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एंड रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस तो इंक्रीज़ हो गया थोड़ा बहुत, बट जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ नहीं हुई. रेवेन्यू तब इंक्रीज़ होता जब सारी की सारी क्वांटिटी बिक जाती मार्केट के अंदर, लेकिन लोग तो बाय करने को रेडी नहीं है. द फर्म्स आर एबल टू सेल ओनली दिस मच क्वांटिटी. देयरफॉर प्राइस इंक्रीज़ होने से कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी डिक्रीज़ हो गया है, एंड कंपनी का प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो गया है. सो बोथ आर अनहैप्पी. Therefore, to sell the unsold goods, the firms will be now willing to decrease the price. जो हम ईयर एंड सेल देखते हैं, सीज़न की सेल्स देखते हैं, वो यही होती है. फर्म के पास एक्सेस सप्लाई होती है. नाउ फर्म विल रिड्यूस द प्राइस सो दैट जो एक्सेस क्वांटिटी है, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, वो बिक सके. दैट्स वाई दे रिड्यूस द प्राइस. देयरफॉर वी कैन से दैट E is the ideal situation. It is the ideal condition जहाँ पर firms as well as consumers both they want to come to this particular situation, and this is the market equilibrium. If I now ask you a question, who determines this equilibrium point? Whether it is the consumers, whether it is the firms, whether it is both, or whether it is the government. Now who decides this market equilibrium? The answer is no one. It is an automatic process. So market mechanism, it is an automatic process. It is an automatic process through which equilibrium is determined and maintained in a market on the basis of demand and supply. It is an automatic process. It means that no one is intervening. It is independent and automatic. There are lakhs of buyers, lakhs of sellers in a market, and there is no negotiation as such between buyers and sellers. So it is an automatic process. No one is determining it. And this process is also known as price mechanism and invisible hand. It is a price mechanism because here prices are getting adjusted. If there is an increase in price, it will again come back to its original equilibrium price. If there is a decrease in price, then again it will come back to the equilibrium price. So the prices are getting adjusted. And this process is known as invisible hand. As I have already explained, there are thousands, lakhs and crores of buyers and sellers. There is no coordination, there is no communication, there is no negotiation among these buyers and sellers. So it is portrayed that there is an hand which is invisible, which is doing all such things. So it is written that there is an invisible hand which is doing all such things. Although there is no hand as such, but this is a theoretical construct. This term invisible hand was given by Adam Smith, who is the father of economics. Now let us study the impact of change in demand on the price level. इसमें हम पहला केस स्टडी करते हैं when there is an increase in demand. चलिए ये मैंने आपके सामने प्राइस और क्वांटिटी का एक ग्राफ बनाया है, and this is the demand curve and this is the supply curve, D and S respectively, and their intersection point is the equilibrium point. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज दिस इज द प्राइस ऑफ होटल्स इन शिमला which reflects the quantity of rooms available.
at this much price, this is the quantity of rooms available. Suppose अब शिमला के अंदर समर सीज़न आ गया है, तो समर सीज़न के अंदर क्या होगा, शिमला में ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, तो डिमांड ऑफ होटल रूम्स विल इंक्रीज़. सो जब हमने स्टडी किया था, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड, then there will be a rightward shift in the demand curve. The new demand curve will be something like this. The new demand curve is D1. Now what is the new equilibrium price? This is the new equilibrium price, E dash. So what has happened to the price? The price has now increased. Earlier the price was P1, now the price is P2. So when there is an increase in demand, then the price will also increase. Now let us see the second case, which is decrease in demand. हम previous lectures में study कर चुके हैं कि when there is a decrease in demand, the demand curve will shift leftwards. If there is an increase in demand, it will shift rightwards, and if there is a decrease in demand, the demand curve will shift leftwards. So इस ग्राफ के अंदर we will draw a new demand curve D2. So D2 is the new demand curve with leftward shift. अगर आपको ये leftward और rightward shift में confusion हो रहा है, then please refer to my previous lectures. Therefore the price has now reduced to P2. there is a reduction in the price. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अभी हमने शिमला का एग्जाम्पल देखा था. जब लीन सीज़न आएगा, देन शिमला के अंदर होटल की डिमांड कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो प्राइसेस ऑफ होटल रूम्स जो हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे. So with decrease in demand, there is price reduction. Now let us study the impact of change in supply on the prices. Let us take the first case where there is increase in supply. So this is the basic demand and supply curve. Their intersection is point E, and this is the equilibrium price, and this is the quantity demanded. So P is the equilibrium price. Now as we have studied in the previous lectures, increase in supply will lead to rightward shift in the demand in the supply curve. There is a rightward shift in the supply curve. So the new supply curve is S1. And what has happened to the price? The price has increased or decreased? The price, as we can say, the price have now decreased. So this is the P1. So we can say that when there is an increase in supply, when the supply increases, so the price tends to fall, price tends to decrease. फॉर एग्ज़ाम्पल जब आम का पीक सीज़न आता है, जब आम बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे होते हैं, तो आम का प्राइस भी कम हो जाता है. वी गेट मैंगोज एट अ लॉट ऑफ चीपर प्राइस. सो लेट अस स्टडी द सेकंड केस. द सेकंड केस इज़ व्हेन देयर इज़ डिक्रीज इन सप्लाई. When there is decrease in supply, the supply curve will shift leftwards, and due to leftward shift of the supply curve, the new price P2 is more than P. So when there is a decrease in supply, the prices tends to increase. So this was all about today's lecture. Thank you so much.